Analogy, Fabian Socialism. What was this? Fabian Socialism. Clear? So first let's look at the origin of this word, Fabian. Okay. So here the Fabian means Quintus Fabius. This is a popular name, Quintus Fabius. तो Quintus Fabius के नाम से there was a society that is known as Fabian Society. Fabian Society. Fabian Society. This Fabian Society was founded in the year 1884. 1884. Something like this, 1884 या 83 कुछ यही टाइम. Quintus Fabius and Fabian Society, 1884. अब देखो रिलेट क्या करना है. Communist Manifesto, the famous book of Marx, we all know about this. Communist Manifesto. इसका ईयर क्या है बताओ. 1848. All of you know this. This is one of the most famous book. मॉडर्न इंडिया में भी इसका रेफरेंस मैंने बताया था. ठीक है ना. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848. This is what? Mid of 19th century. Okay. And you can say that this book is the signature book for this idea of communism. इसी बुक ने कम्युनिज्म वाली आइडिया को क्या किया? पॉपुलर बनाया. तो इस बुक के आने के बाद ये आइडिया क्या होगा? दिस विल बिकम पॉपुलर मोर रैपिडली. ठीक है. एंड दिस कम्युनिज्म, सिंस दिस बुक वाज रिटन बाय मार्क्स एंड एंजल्स, ठीक है, एंड दिस आइडिया कम्युनिज्म, ये बात हम समझ चुके हैं कि दिस इज व्हाट? रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म. ये क्या है? रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म. दिस इज अ काइंड ऑफ रेडिकल वर्जन ऑफ सोशलिज्म, जो किस चीज की बात करता है? रिवॉल्यूशन की बात करता है. एंड इन रिवॉल्यूशन ये किस चीज को वैलिडेट करता है? तो यूज ऑफ फोर्स को वैलिडेट करता है. Do you think that the people in Britain, the capitalist class, will start fearing from the popularity of these ideas? Yes. In the mid of 19th century, what we see? Flight of capital from Britain to India. याद आया कुछ? Third phase, modern Indian history class. बताया मैंने. Flight of capital. Finance capitalism phase. Okay. What will happen? In India, development of infrastructure, development of banking, financial institutions will start. And here the British will invest money, because they consider that India is the safe destination where they can invest money. In Britain, this idea was gaining popularity. Got it? This idea of revolutionary socialism was gaining popularity. Reason था उसका, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, और जहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वहाँ वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन था. जहाँ वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन है वहाँ इक्वलिटी की बात होगी, और जहाँ इक्वलिटी की बात होगी वहाँ सोशलिज्म आएगा. जहाँ ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा वहाँ क्या, कौन सा सोशलिज्म आएगा? रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म. नाउ द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट वर फियरिंग. एक बड़ा रीजन ये भी था कि इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज किया गया. इन इंडिया द ब्रिटिश पुट देयर इन्वेस्टमेंट्स in the development of railways in India. Okay, where they provided a kind of guaranteed rate of interest on the returns of the investment made by the British people. Okay, so British people will start investing money in India, because in India these ideas were not popular at this time. इंडिया के लोगों को ये मार्क्स वार्क्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था. ब्रिटेन के लोगों को पता था, तो ब्रिटेन के लोग डर रहे थे. तो एक मॉडर्न इंडिया से ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना कि आफ्टर 1848 व्हाट हैपेंस इन इंडिया, the flight of British capital from Britain to India start in the form of investment. और investment पे जो profit होता था that will again return to Britain. And this was also an attempt to make their money safer in India, because in Britain this revolutionary socialism was gaining popularity, but in India these ideas were still not popular. इतनी बात समझ में आई? यानी ये चैलेंज तो ब्रिटेन में है, तो यहाँ क्या होगा? फेबियन सोसाइटी. इन इंग्लैंड this society will be established, that is called Fabian Society. और ये Fabian Society किस चीज की बात करेगी? Okay, bringing, okay, equality, to establish idea of equality in the society, bringing reforms in the conditions of workers, इनकी बात करेगी. So this Fabian Society, read this, okay, read this. In England will focus on what? Will focus on the idea of bringing equality. It will focus on the idea of bringing equality. Now, what they will say?
इक्वलिटी कैसे आएगा? मार्क्सिज्म क्या कहता है? इन अ सिंगल स्ट्रोक, एक बार रिवॉल्यूशन होगा और फिर इक्वलिटी आ जाएगी. बट द लिबरल मॉडल्स विल से व्हाट? It will be gradual. In India also we are trying to do that, but not in a single stroke. किसी रिवॉल्यूशन से नहीं, थ्रू लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, रिजर्वेशन, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं. मेरी बात समझ गया ना? सो हियर व्हाट दे बिलीव इन ब्रिंगिंग इक्वलिटी इन द सोसाइटी, राइट? They believe in, right? They believe in bringing reforms in the lives and conditions of workers. They believe in bringing reforms in the lives and conditions of workers, but not in a single stroke. It means they don't believe in this idea of revolution, not in a single stroke, but in a gradual process. Okay, so they believe in bringing changes. They believe in bringing changes, but not in a single stroke, but not in a single stroke. Single stroke में नहीं लाना change. ठीक है? They believe in what? Gradual changes. धीरे धीरे आएगा. Okay? Reforms अचानक नहीं होगा. It will take time. They believe in the idea of gradual changes. ठीक है? Gradual changes से reform आएगा. And for that उसके लिए करने की क्या जरूरत है? Legislative reforms. Gradual changes कैसे आएगा? You will have to do what? Legislative reforms. ये करना पड़ेगा. और क्या करना पड़ेगा? Okay, you will have to make efforts to promote social consciousness in the minds of the people. ठीक है, लोगों के दिमाग में social consciousness बढ़े, वो मजदूरों को exploit करना बंद कर, right? So this will take time. Okay, so you will also have to do what? You will also have to promote social consciousness. ये भी करने की जरूरत है. You also have to promote what? Social consciousness. Social consciousness भी promote करने की जरूरत है. That is one part. Right, next point. Okay, educational movements for education, growth and development of trade unions, right? Growth and development of the trade unions. Okay, right, giving representation to the workers in legislative and executive offices, also giving representation to the workers in legislative and executive offices also. यहाँ पे भी क्या करना है? Workers को giving representation to the workers in the legislative offices also. So in this way, what will happen? Reforms will be introduced in a gradual manner. For example, Annie Besant, she was also a socialist. But which kind of socialist? She believed in the idea of revolutionary socialism or evolutionary socialism. Okay, so did not believe in the idea of revolutionary socialism. Okay, here this idea is what? Okay, evolutionary socialism. Okay, so Annie Besant was also you can say that Fabian socialist. Have you got this idea? मॉडर्न इंडिया में कैसे रिलेट करना है? थर्ड फेज जो मैंने बताया था आपको, वेयर द ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया. व्हाई? दिस इज वन फैक्टर. ओके, एंड टू काउंटर रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म, ब्रिटेन में कौन सा स्ट्रीम पॉपुलर होगा? फेबियन सोशलिज्म. बेसिकली ये लाया क्यों गया है? टू काउंटर रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म. ठीक है, कि रिवॉल्यूशन की डिमांड हो उससे पहले ही हम क्या कर देते हैं? रिफॉर्म्स ला देते हैं. गॉट इट? तो देखो, जैसे आप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखते हो, दिस इज नॉट रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म, दिस इज मॉडरेट वर्जन ऑफ सोशलिज्म. व्हेन गांधी टॉक्स अबाउट सर्वोदय सोसाइटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, गांधी वाज आल्सो अ सोशलिस्ट, बट व्हिच काइंड ऑफ सोशलिस्ट? ही बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, बट ही डज नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट. गांधी कहते नहीं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं. और आप देखो, गांधी आल्सो टेक हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास. इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ने बहुत हेल्प करी है, सपोर्ट करी है गांधी की. कैपिटलिस्ट क्लास ने, लाइक जीडी बिरला एंड ऑल दिस, क्लियर. एंड in South Africa also he set up farms with money, with the financial help and support of the capitalist class. In India also, and Gandhi was knowing this, that when you are going to launch a movement that will be one of the biggest movement in the country, so you must need funds. And who will give you funds? Capitalist class. So Gandhi believed
in this idea of, okay. So trusteeship theory क्या है, ये भी आप बात समझ रहे हो. गांधी ये नहीं कह रहे हैं कि रिवॉल्यूशन से इक्वलिटी है, राइट. गांधी का क्या कहना है, दैट विनोबा भावे का क्या कहना है, भूदान मूवमेंट सुना होगा आपने, ठीक है ना. यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, अपनी मर्जी से. मेरी बात समझ गया ना. आपने क्या किया, वर्कर्स को भी, है ना, आपने राइट दिया. मेरी बात समझ गया ना. ऑन पेपर नहीं है, बट यू आर कंसिडरिंग देम इक्वल पार्टनर्स इन योर बिजनेस. यू आर कंसिडरिंग द प्रोडक्ट एज अ सोशल प्रोडक्ट, कि भाई जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, सबकी भागीदारी है, सब मिलके इस काम को कर रहे हैं. मेरी बात समझ गए. तो ये एक मतलब स्ट्रीम है, दो मतलब पैरेलल है. तो सोशलिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं वो मॉडरेट वाला वर्जन वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं. बट जब हम कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म की बात करें तो हम रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट पे चले जाते हैं, रिवॉल्यूशन पे चले जाते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे चले जाते हैं. ठीक है ना. इतनी बात आपको समझ में आई. अब रशियन रिवॉल्यूशन व्हेन आई विल टीच यू, यू विल अगेन गेट सम आइडिया अबाउट दिस सोशलिस्ट, ओके, मॉडल, कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है. दिस यू विल लर्न. So now the next chapter is Russian Revolution. Read this. The name of the next chapter, that is Russian